नाजरीन, पक्की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा वाजिद। नाजरीन, आज पक्की खबर में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, एक इंसान की सेहत, हेल्थ, उसके मतलब हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है जूलियाना लोपेस डी सोजा। जी हाँ। और इनके हाथ में ये एक बुक है, किताब है, और इस किताब का नाम है पॉइजन फ्रॉम बर्थ। जी हाँ, नाम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और इसके टाइटल के ऊपर ये दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं। एक दोनों मेडिसिन, एक कैप्सूल है और एक टैबलेट है। इसकी पिक्चर्स, दो पिक्चर्स हैं। इनका कहना है जी कि इन्होंने 15 साल स्पेंड किए हैं ये बुक लिखने में। इन्होंने ये जो बुक लिखी है, और इस बुक में जो कुछ इन्होंने लिखा है, इनका ये कहना है, इनसे बात भी होगी, इनका ये कहना है जी कि इस बुक के अंदर जितनी भी ये जो आप मेडिसिन खाते हैं किसी भी बीमारी पर, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन पर बात की गई है कि एक मेडिसिन है उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और सिर्फ मेडिसिन्स के ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी और जो खुराक आप खाते हैं रोज़ाना की, जो पानी आप पीते हैं, इसके अलावा और कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान रोज़मर्रा इस्तेमाल करता है लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है। वो जहर जो है वो एक किस्म का वो पी रहा है या खा रहा है। तो इस पर इन्होंने ये किताब लिखी है। इनका ये भी कहना है कि इनकी अपनी ये खुद भी कितनी बीमारियों का शिकार रही हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद जब इन्होंने की और ये बुक लिखी, उस दौरान इनका ये कहना है कि इन्होंने वो मेडिसिन सारी छोड़ दी। और मेन इनका मकसद कहने का ये है कि ये सारी मेडिसिन्स के बदले आप जो देसी नुस्खे हैं, नुस्खा जात हैं, देसी रेमेडीज़ हैं, वो इस्तेमाल करें। और किस किस बीमारी पर कौन कौन सी रेमेडीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस किताब में मौजूद है, इस बुक में मौजूद है। लेकिन ये बुक अभी इसका फर्स्ट एडिशन है और ये इंग्लिश में लिखी गई है, इंग्लिश में प्रिंट है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये बुक इन्होंने उर्दू ट्रांसलेशन के लिए दी हुई है, और जल्द इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी उर्दू में, और उसके बाद प्रिंटिंग मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बाज़ार में, मार्केट में ये हर बंदे के लिए दस्तयाब होगी। उसका एड्रेस, पता, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा कि ये कहाँ से आपको मिलेगी। और इनका कहना है ये कि ये इंतहाई मुफीद बुक है। आपकी इंसान की ज़िंदगी में सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सेहत सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। तो उस सेहत के हवाले से ही, हेल्थ के हवाले से ही इस बुक के अंदर इन्होंने जो कुछ लिखा है, अब इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। चूँकि ये उर्दू भी बोल सकती हैं लेकिन इनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश में ही ज़्यादा ये बात करेंगी, उर्दू में भी करेंगी। तो इसलिए मैं इनके बात करने से पहले थोड़ा सा उन लोगों के लिए कि जो इंग्लिश नहीं समझ सकते, लेकिन ये उनको बताना मैं चाहता हूँ कि ये बुक उर्दू में भी आएगी। आपके जहन में होना चाहिए कि ये बुक जो है अभी तो इंग्लिश में है। अगर कोई किसी घर में कोई इंग्लिश पढ़ सकता है, वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है, तो उससे ये पढ़वा कर ट्रांसलेट करके तो ये इस बुक से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जूलियाना लोपेस डिसूज़ा से कि ये क्या कहती हैं। हाय जूली, यू Hi, राइट? I'm fine. ओके, Thank you. राइट। तो अब मैंने उर्दू में अपने जितने भी नाजरीन हैं जी हमारे पक्की खबर के, उनको बता दिया है कि इस बुक के मतलब क्या है। आप समझ तो सकती हैं आप जी उर्दू सारी, जी जितनी बोल सकती हैं उतनी बोलें। अब थोड़ा सा हमें ये बताएं कि इस बुक की क्यों ज़रूरत पड़ी सबसे पहले आपको, ठीक? और कितना टाइम आपने, कितना अर्सा इस बुक को तैयार करने में लगाया, और कैसे आपको पता चला कि इस किस किस जो मेडिसिन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। In 2005, I had a car accident. I was bedridden for nearly 3 years, and I was having loads of medicines at a time, really strong medicines.
And then I asked myself a question: why wasn't medicines healing me when I was taking medicines every day? Why was I feeling sick every day, even while I was taking medicines? I asked myself another question: why is medicines not curing me? And that's what triggered me off on the biggest challenge of my life. I began researching slowly as I started getting better. I had 7 injections in my spine, so I could wean myself off all the medicines I was given at the time. And yeah, it was a journey and a half. It took me 15 years plus, to be honest, to do the research. And I went into really in-depth research where I asked for my medical records. I got all the names of the medicines. I got all the side effects. I started connecting all the side effects to and calculating them. I was on 132 side effects on a daily basis for the last 20 years, as long as I was having those medications. And one medicine was causing me side effects, then I was given more medicines for the side effects. Like, for example, one medicine was causing me high blood pressure, heart problems, thyroid problems, for example. And then I was given individual medicines for each of those problems, again, increasing the side effects on a daily basis. Until the point when I thought to myself, if medicines are not healing me, there's no point taking them. And I began weaning myself of all the medicines, and all my problems disappeared. I have got medical proof. I've got blood tests that I have every few months. I have to take because of my thyroid, and it's proved that. So what you took as a alternative of the medicines, like remedies? Right. The first thing I did was of course to wean myself of the medicines. It took me nearly a year, and then in between I started finding different cures, like for headaches, because my main problem that at the time was severe chronic headaches. And then I found a remedy for. The first remedy was, of course, weaning myself of the chemicals, and then when my body started healing, then all my problems started disappearing. So I didn't need headache medicine anymore. Otherwise, I was on headache medicine all the time. And as I said to you, that I was on 132 side effects. So when you read the book, you can see that like how one medicine had 73 side effects, and I was getting 18, and that one medicine turned my life upside down. So then for each disease that it caused me, I was having more medicines. लेकिन जूली बात यह है कि अगर एक बंदा मेडिसिन ले रहा है, someone is taking tablets, जी. how he can stop? जब वो छोड़ देगा या स्टॉप कर देगा तो उसकी तो वो बीमारी ज्यादा होगी ना. The problem that I realized, I can't tell anybody to stop taking their medicines. I'm not advising anybody to stop taking their medicines, but I'm advising people to stop eating too many chemicals. It's the chemical overdoses in food and creams and face creams and body lotions and water is causing the problem. And then we reach out to medicines that's causing more problem, because the medicines have got the same chemicals. You see, that's the problem. So we are living in an overdosed, chemical, toxic. We have become chemical addicts, worse than drug addicts, because it's affecting billions of people in the world. Chronic disease has increased tremendously. Now in 2000, the World Health Organization, this is World Health Organization saying that 2022, 50% of the world population is going to have cancer. Now we are in 2022. So the reason why cancer has not been eradicated is because we're drinking water, poisonous water on a daily basis. Fluoride is a very dangerous chemical that was declared a neurotoxin in 2014. So what is it doing in water? It was still doing in mouthwash and toothpaste. So daily. What is in the toothpaste? Fluoride. Yeah. Fluoride, along with all the other chemicals. There are quite a few other chemicals in toothpaste and mouthwash. Now, what I accidentally found out, that mouthwash has caustic soda in it. So what is caustic soda? A very, very strong bleach that we use to clean our toilets, doing in our mouthwash. Now, it's also called soda lye, and it's also called sodium hydroxide. So that's how people get confused, because they don't know what they're actually using on a daily basis. Now, I also stumble on the fact that
there are chemicals that are used to embalm dead bodies. Is it? Very, very strong chemicals in our food, in our drinks, in our creams that we use on a daily basis. And it's just shocking to think that we are actually made into chemical zombies. Now, there was so much information that I gathered in the 15 years of my research that I had to divide the books. The first book, I Poison from Birth, is only concentrating on my health U-turn, how I healed 24 of my health problems. My medical history shows that I've had thyroid problems, bladder issues, heart problems, headaches, memory problems, depression, kidney problems, arthritis, osteoarthritis, insomnia, fatty liver complications, dizziness, weight gain, severe stomach pain, allergies, gallbladder problems. This is all in my medical history. Nausea, irritable bowel syndrome, of course, slow eye decline, of course, is also based on chemicals, high blood pressure, low blood pressure, vertigo, and gout. In the last 5 years, all of these problems have disappeared How come? How? because I weaned myself of all the chemicals and the medicines. I weaned myself of everything. देखो, इसका अल्टरनेटिव क्या था? ये नाज़रीन भी जानना Right. चाहेंगे कि आपने ये मेडिसिन छोड़ दी, स्टॉप जी, कर जी. दी, लेकिन क्या अल्टरनेटिव क्या आपने इसका लिया है Yeah. कि आप Right. What I realized that all these chemicals are actually causing internal inflammation. Internal inflammation is causing all the problems, from heart attacks to strokes to everything that's there wrong in the body, because all your disease begins in the gut. If what you're eating is getting digested in your gut, and what you must understand that artificial chemicals cannot be digested by the body, and should not be mistaken for the chemicals that are in our stomachs, where people think, oh, that you got chemicals in like human chemicals in the stomach, so they're the same as the artificial chemicals. They are not, because the body cannot digest the artificial chemicals. The artificial chemicals are made from coal tar, petroleum, and antifreeze. The body cannot digest it. Now, chronic disease is just as bad as cancer. The amount of children from childhood getting ADHD, dyslexia, all these different neurological problems are all caused by chemicals. So, what is the future of mankind? This is another question I ask myself. Where are the regulators taking us? Because right now, every single global organization that regulates food, medicine, chemicals have failed in their duty. And this is why chronic disease has taken over the globe. And it's big business. Morally, we cannot allow this to happen anymore. And the doctors' hands are tied. They don't know half of what I've researched, I think, because I wouldn't like to think that they would prescribe poisonous medicines. But actually, medicines are poisonous because of the chemicals. I know, but Judy, my question is still there. Yeah. That what is the alternate? The alternative is, as I said, first detox yourself from chemicals. Then you'll start getting better. Then, if on occasion you have a headache or whatever other problems like pain in your joints, I've used ginger, garlic, turmeric, hemp oil for pain relief. Have you mentioned in your book all these Yes, remedies? everything is in this book. Everything is in this book, yes. Right. Because तो इसका मतलब है कि अगर मेडिसिन आप स्टॉप कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो सारा कुछ इसमें आपने लिखा हुआ है जी, जी. कि ये चीजें लें उसके बदले में, like for example, like slowly जी. आप छोड़ देंगे मेडिसिन. Yeah. What I've while I was experimenting on myself, I found that having cardamom, half a teaspoon of cardamom and half a teaspoon of cinnamon, when you first get a headache, when you feel that when it starts off, and if you have it twice, on the headache goes away. And again, all down to inflammation. All disease is down to inflammation. So, कितनी बीमारियों का आपने इसमें जिक्र किया है कि जो बीमारियां हैं और जो मेडिसिन हैं अगर वो ना लें उसके बदले में दूसरी अगर कोई रेमेडीज लें तो वो कितनी अराउंड कितनी मेडिसिन
Right. As I said to you earlier, I was diagnosed with many medicines, and I've written it all down in this book. I'll just give you an example. जितनी बीमारियां आपको थी Ji, वो for that. आपने This is my story. This is my जो life here. आपके Ji. उन सब का अल्टरनेटिव आपने Yes. बताया है Yes. इस बुक में Yes. कि क्या क्या रेमेडीज कौन सी लेनी है उसके Yes. बदले में कौन Yeah. सी लेनी है Yeah. हेडेक्स के लिए How कौन सी how है I heal myself. Yeah. क्रोनिक डिजीज है उसके लिए जी, कौन सी है या yeah, इसके yeah, अलावा yeah, राइट yeah. I have actually, like, for example, each medicine, there's a section here, a day in the life of a pill. So what goes in every single medicine? There's preservatives, binders, fillers, glues, lubricants, and there's so many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chemicals in every medicine. So you can imagine if you're having 6 medicines on a daily basis, you're already overdosed 6 times. Do you understand? So each of them, if you're having 6 medicines, all got the same chemicals and the same, so you overdose 6 times, if you know where I'm coming from. Yeah. So how can the medicine heal you? And right now, there's no medicine, no mainstream medicine can actually heal anybody. It's only a management of the disease. राइट So that's technically the motto of the mainstream medicine and medical system is the management of the disease, not cure. राइट और जूली राइट जी हाँ नाज़रीन आपने सुना है जूली की ज़ुबानी भी और ये बुक आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस बुक में जूली का कहना है कि जितनी भी आपको अब बीमारियां हैं आप मेडिसिन ले रहे हैं उन सब का अल्टरनेटिव जो है वो बताया उनके बदले में आप कौन सी जो है वो देसी नुस्खा जात जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपको पेट की कोई बीमारी है इसके अलावा आपको सर का दर्द है और भी कितनी बीमारियां हैं जिसमें उन सब का जिक्र किया गया है कि उसके बदले में आप कौन कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इन जो अद्वियात हैं मेडिसिन हैं इनसे जान छुड़ा सकते हैं और ख़ास तौर पर ये अद्वियात के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं उनसे आप जान छुड़ा सकते हैं। तो जूली का कहना है कि ये बुक बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह जो मिलेगी उर्दू ज़बान में भी मिलेगी और उर्दू और अरबी में, हाँ जी, इन दोनों ज़बानों में भी यह बुक आपको मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इंग्लिश भी बुक ये अभी ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो where they can buy They can buy this it book? from my online shop. I've got an online shop with the same name, www.poisonfrombirth.com, and it's international. People from all over the world can buy it. www.poisonfrombirth.com। हाँ जी, हाँ जी, जूली का कहना है कि ये वेबसाइट पर आप जाएं www.poisonfrombirth.com, तो आपको ये बुक वहाँ से भी मिल सकती है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा जब उर्दू में आ जाएगी तो वो भी आपको अवेलेबल होगी इसी वेबसाइट पर इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर ये बुक ख़रीदेंगे और एक चीज़ जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो, मेरे ख्याल में वो ज़रूर आपको ख़रीदना चाहिए। उसके ऊपर अगर 5, 10, 20 पाउंड अगर ख़र्च करने पड़ जाएं तो ज़रूर करने चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जहाँ तक भी ये इंटरव्यू लोग सुने देखेंगे, जहाँ तक भी ये रिपोर्ट्स जाएगी, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि लोग ज़रूर इस बुक से फ़ायदा उठाएंगे। अगली पक्की खबर तक के लिए अपने मेज़बान राजा वाजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।